Okay, my dear students, I hope you all are well. Dear students, yesterday, which topic we were discussed? Can anyone tell? Yesterday, I was discussed which topic? Rajdeep, can you tell me what was the topic on yesterday that I was told you? Somadeep, Yuvraj, Shivam. Nobody have idea what topic Sir, I was discussed yesterday. have finished Sorry. Sir, we have finished optical fiber cable. Very good. Sir, Optical we fiber have cable. We will finished discuss about optical fiber unguided cable. media. So now let's move on. And today we were discussing for few more new concept. Okay. So my dear students, do you have any problem till now? अभी तक कोई problem, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, अभी आप पूछ सकते हैं. ये लाइव क्लास चल रही है. ओके, मेरे ख्याल लाइव क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव होती है. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. कोई प्रॉब्लम? No, sir. कंफर्म? ओके. Yes. If you have no problem, my dear students, so now today I am going to start unguided media. Today I'm going to start the new topic. I mean, I have already explained you this thing in class 9, but for now, today I'm going to start the topic that is unguided media or wireless communication. We need to understand unguided media or wireless communication. We need to understand this thing. So my dear student, why this is called unguided media and why or wireless communication? Just because of that, it doesn't require any physical medium like wire. It does not required any physical medium or wire to transmit the data from one computer to another. Basically, it does not require any physical medium or path. My dear student, हमें अनगाइडेड मीडिया में कोई भी फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी तार की जरूरत नहीं पड़ती डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. ओके, सो दिस इज बेसिकली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दे जनरली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electromagnetic waves to transmit the data, or they generally use electromagnetic waves. My dear student, जनरली इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अनगाइडेड मीडिया में या वायरलेस कम्युनिकेशन में. So they does not require any physical wire like twisted pair, optical fiber, and they don't require these things. इनमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. We can directly send the data or information. Okay, so how we have to do? There are mainly three types of wireless communication. First one is radio communication, radio waves. Second is satellite
Second is satellite. You definitely heard the satellite communication. So the second is satellite communication. I just write the name as well. Okay, satellite microwave, satellite microwave. Okay, so we have basic, and the third one, last but not least, third one, which is terrestrial microwave. So mainly three types of technologies are used to transmit data in unguided medium. Like the first one is radio wave, second one is satellite microwave, third one is terrestrial microwave. My dear student, any problem here at this point? My dear student, do No, you sir. face any difficulty? No, sir. Huh? Okay, that means you have cleared from this point. Okay. Yes. Now, my dear student, first of all, we're going to understand what is radio waves. I'm sure, I'm damn sure that you are definitely heard the news about heard the radio, name of radio. आपने रेडियो का नाम जरूर सुना होगा. Yes, sir. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब भी सुना होगा रेडियो के बारे में, तो आप लोगों ने रेडियो में आजकल वो तो सबसे पॉपुलर होता है एफएम. ओके, उसका भी नाम सुना होगा. सुना है? Yes, sir. Yes. आप लोगों ने सुना होगा जैसे रेडियो में. अच्छा, तो रेडियो में जब भी आपने नाम सुना होगा, उसमें आपने नाम सुना होगा जैसे रेडियो 93.5. नाम सुना है? रेडियो 93.5. Yes, sir. नाम सुनाइए. Yes, ये sir. 93.5 क्या होता है बच्चों? Frequency. ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आज समझेंगे पहले रेडियो वेव क्या होती है, फिर सैटेलाइट माइक्रोवेव क्या होती है, फिर टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होती है. एक एक चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे. जहां समझ में नहीं आएगा उसको आप फिर से मुझसे पूछेंगे. ओके, समझ में आई बात बच्चों? मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. और ये बताइए, आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया सारा? No, sir. कब करेंगे? सर कोर्स लेने जाते थे मिलता क्या सर? वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है बुक सर. तुम्हें बुक की क्या जरूरत है? हम तो सारा नोट दे रहे हैं ना तुमको. सर बुक वहाँ पे सर बुक लेंगे तो सर वो कॉपी भी देंगे. सिर्फ बुक नहीं दे रहे. अगर बाहर से कॉपी लेंगे तो सर वो बुक भी देंगे, कॉपीज भी देंगे बुक के साथ. ओके ओके ओके. कब तक बुक देने के लिए उन्होंने कहा है? सर फ्राइडे. चलो वेट कर लो आप. सर वो लोग कह रहे थे नहीं तो फाइल नहीं देंगे. ओके बच्चों, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. थोड़ी हाई हो जाएंगी डेफिनेशन आपके लिए, आपके लेवल से मुझे बताना पड़ेगा. My dear student, I'm just going to share you the screen. That is, can you see the screen? Yes, sir. So as you can see, the radio waves are the type of electromagnetic radiation best known for their use in communication technology. I told you that radio waves are a type of electromagnetic waves or electromagnetic radiation, whatever you want to say, best known for their use in communication technologies such as television, mobile phone, radios. Okay, these devices receive radio waves and convert them into mechanical vibration in speakers to create the sound. Okay,
माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियो वेव्स होती हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। आप सिर्फ यहां तक समझिए। What are the radio waves? So the answer is very simple. If anyone asks what is radio waves, I just remove this thing. If anyone asks what is radio waves, what is radio waves, so you can answer it. I mean just spelling error ho gayi. What is radio waves? So you can easily answer that. Radio waves are a type of electromagnetic radiation best known for their use in communication technologies such as television, mobile phone and radios. Do you have any problem in this? बच्चों? No sir. No sir. My dear student, there are two things in the radio waves. Okay, in the radio wave technology, there are two things. There are two components. Okay, the radio wave setup. The radio wave setup. Two parts. तो दो पार्ट्स होते हैं बच्चों उसमें मेनली। पहला पार्ट होता है ट्रांसमीटर का, द ट्रांसमीटर। सेकेंड होता है द रिसीवर। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है इसको समझते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके I just try to explain you with the help of the diagram. My dear students, I'll just show you the very easy pic so you can easily understand that. I'm just showing you the image. My dear student, can you see this figure? There is an antenna. There is an antenna which transmit the radio waves. This transmit the radio waves in the form of electromagnetic waves. These you can see these waves, blue color waves. This is called electromagnetic waves. This is called transmitter. This is called transmitter. And look at our mobile, our radio, or our television. These are called receivers. These are called receivers. Okay. So my dear student, though any device, any antenna which transmit the electromagnetic waves are called transmitter. And the device which collects the transmitted data is called receiver. In our case, our mobile is the receiver, and the you can say that and the antenna, or you can say that a pole, or you can say that a tower, any company tower like Jio tower, like Airtel tower. All these are considered as transmitters which transmit the electromagnetic waves, and our mobile, our television signal are considered as receiver. So do you have any problem at this point? My dear No, student, sir. tell me. No, Okay, sir. so this is, there are mainly two parts, the transmitter and the receiver. So this technology is work on this principle. So my dear student, I hope you have no problem in this. So dear student, do you like my online class or recorded class? Tell me. Sir, Right, live class is much better than the video class. Sir, live class Sir, is much better than the video class. Acha. Okay. The transmitter takes some, my dear student, this is all about the radio signals. So what we have to understand about this, that
the transmitter takes some sort of message. It could be sound or someone's voice, picture, TV set data, or data for the radio modem or whatever. Encode it onto a single wave and transmit to the radio wave. The receiver receives the radio wave and decode the message from the sine wave it receives. Both the transmitter and receiver use antenna to radiate the capture the radio signal. My dear student, चाहे मोबाइल, चाहे सेंडर हो या रिसीवर, चाहे ट्रांसमीटर हो चाहे रिसीवर, दोनों में एंटीना लगा होता है सेंड मैसेज को सेंड करने के लिए. ओके, सेंड और रिसीव करने के लिए both have antennas. Okay, my dear student, you can easily understand from this point what is transmitter and what is receiver. And if anyone asks, give one example of receiver, so you will give the example of mobile phone, and this is how we have to understand this concept. Now, my dear students, we need to understand the advantage and disadvantage of. We understand the advantage and disadvantage of radio waves. So the biggest advantage of the radio wave is the radio wave transmit offer mobility. My dear student, इसमें बहुत मोबिलिटी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने पे भी प्रॉब्लम नहीं होती. आप अपने आप को मोबाइल का यूज करते तो आप एक जगह दूसरी जगह टहल कर भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. कोई प्रॉब्लम आती है बताइए? नो सर. टहल करके बात करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं ना, यानी ये मोबिलिटी बहुत प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इट प्रोवाइड चीपर देन डिगिंग ट्रेंचेस ऑफ लाइन केबल. बेटा केबल्स के थ्रू, केबल की कंपैरिजन में ये बहुत ही इजी और चीप है, बहुत ही सस्ता है इन कंपैरिजन विद यू कैन से दैट गाइडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया. थर्ड इज ऑफर फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्विजिशन राइट. बेटा इसमें जमीन खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा डिवाइसेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इसके अलावा इट ऑफर ईज टू कम्युनिकेट ओवर डिफिकल्ट टेरेन्स. अलग जहां पे टेलीफोन लाइन बिछाना मुश्किल है, वहां पे भी टेलीफोन, यहाँ पे भी रेडियो वेव चली जाती. ठीक है, गांव देहात में, गांव में भी रेडियो वेव चल जाती है बच्चों, है ना. टेलीफोन लाइन तो नहीं वहां बिछ पाई है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ पाई है वहां पर रेडियो वेव पहुंच जाती है. यानी टेरिटोरियल रीजन, मोबाइल रीजन पे भी रेडियो वेव का पहुंचना इजी है. सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो वेव. इसका कोई डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज क्या है? रेडियो वेव कम्युनिकेशन इज इंश्योर इन सिक्योर कम्युनिकेशन. माय डियर स्टूडेंट, रेडियो वेव का एक प्रॉब्लम है, ये इनसिक्योर होती है, यानी कभी भी कनेक्शन टूट सकता है. यानी कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉल कर रहे हो और कॉल आपकी डिस्कनेक्ट ना हो जाए. कभी कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है ना बच्चों, कभी कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है ना. हेलो, यस. या जूम मीटिंग कभी कभी बंद हो जाती है ना ऑटोमेटिक, जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, या सिग्नल का इश्यू हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज इनसिक्योर नेटवर्क. रेडियो वेव्स कभी भी ब्रेक हो सकती हैं. इसको ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना हम कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज ऑटोमेटिक. ओके. सेकेंड इज radio wave propagate in a susceptible to weather effect like rain, thunderstorm, etc. My dear student, कभी कभी आप नोटिस करते हो जब मौसम खराब होता है तब भी रेडियो वेव्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, डेटा ट्रांसमिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है. जैसे बारिश होती है या कोई आंधी तूफान आता है, तो इन दैट केस you will find that the data transmission is bit difficult just because of poor weather forecast. So this is all about this radio wave. So my dear student, I hope you understand this advantage and disadvantage of radio waves. So I just wind up from this point. Today I'll just taught you unguided media and different types of radio transmission, where under this different types of wireless transmission I told you radio waves. Now tomorrow I will tell you terrestrial and satellite communication. So my dear student, available for that. Until then, have a nice day, have a good life. Thank you very much. Sir. Any doubt? Sir, what is man topology? What is mesh topology? Man topology. Mesh topology. My dear student, I will explain this thing on once when I will start a topology, which is started on you can say that 2 to 3 days after. Okay, when I explain this, I will tell you what is mesh topology, because this is a different concept. Okay. Yes sir. Do you have any problem in guided and unguided media? Tell me. No sir. जितना मैंने पढ़ाया है वहां तो कोई प्रॉब्लम है? The topic that I was covered till today, do you have problem on that? बताइए.
No, sir. Okay. So now I wind up this class, and I believe that you will continue to enjoy learning computers. Thank you.